a specific rolling resistance of the car in Newton per ton. Is what is the work? It is given that final, it becomes rest. Why it becomes rest? Initial, it has some energy. Yes, sir. But finally, it becomes rest after some motion. It is in the question. So, what is the Newton per ton of resistance? So that this becomes rest. What is the initial energy of this car? क्या है initial energy? 1/2 MB. क्या है? half MB plus MGH. Half. Half MB square. But here initial velocity is given 0. Here velocity is 0. So kinetic energy will be 0. हाँ, ठीक ठीक ठीक. But potential energy is there. What is Yes, potential sir. energy? MGH. mgh, right? H. ठीक है. H is the 3 meter and mass is the 2 ton. Okay. 2 ton. G 9.8. ठीक है. Okay. And height is 3 meter. This height, always vertical height. Take vertical height whenever you are taking potential energy. What is the final energy? What is the final energy? Bolo. 58 point. It's Final energy. Final. I'm asking ठीक, about ठीक. the final energy when this body at its rest. सर उसमें रेस्ट हो जाएगा तो अच्छा ये बताओ. Kinetic energy. Is there any kinetic energy? no. Is there any potential energy? Yes. No. नहीं. Zero. Frictional You energy take it- होगा सर. No, कोई एनर्जी नहीं होगा. Frictional energy will be lost in this motion. Means our final energy is 0. सर वो रेस्ट की Yeah. पोजीशन में है तो Yeah, that's why it is in rest. And also have no potential energy because it is at the ground level. We have taken this as a ground level. Where this energy lost, delta E, because of the work done अच्छा by ठीक है. any. पोटेंशियल एनर्जी सर बॉडी हाइट पे नापी जाती है ना. Yeah, when a body is at height, हाँ. there is a change in energy, and this energy will be due to the work done by the resistance, rolling resistance. What was the initial energy? mgh minus final energy 0. Let's say rolling resistance which is asked in Newton per ton is Newton per ton is x. And what is the mass? M. And what is the distance traveled? टोटल है ना. Yeah, distance traveled total. What is the energy? क्या होता है? What is the energy? Energy is also force into distance traveled. Yes. So force is the due to the resistance, rolling resistance.
And what is the distance traveled total? Sir, 45 plus 85 85? plus 45. 130. 130, right? mgh is equal to, let's rolling resistance, we assume that x into m into 130. Mass got cancelled. Then what is h? 3 by 130 x, which is in Newton per turn. Everyone got the answer? सर एक डाउट है सर मेरा. हाँ बोलो. सर फिगर लाइए. सर ये मीन सर फिगर ये फिगर सर, ये जो कुछ इंक्लाइन में है इसका या तो रोलिंग रेजिस्टेंस अलग होगा ना सर. कुछ इंक्लाइन है इसके वजह से इसका अलग होगा, और ये नहीं, सर स्ट्रेट है. no rolling, there this is inclined, but the surface length we need for the rolling resistance. मीन्स ये लेंथ कितना है, इससे मतलब है ये इंक्लाइन हो या जो हो नहीं मतलब है, बिकॉज यहाँ पे mg का कोई काम थोड़ी है. वी आर नॉट टेकिंग दिस mg डाउनवर्ड फोर्स और एनी, ये इंक्लाइन हो या प्लेन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सर वी इसी आर में नॉट टेकिंग अगर जो mg. इंक्लाइन है उसका एंगल दे देता तो? इंक्लाइन एंगल तो ऐसे भी दिया हुआ है. हालांकि सर इसका हम दो सॉल्यूशन देखे हैं सेम क्वेश्चन को ऑलरेडी बनाए हुए हैं सर. हाँ वो तो ऑलरेडी बना है. एक 45 एक डिग्री. गोराई में सर इसका सर जैसे आप बताए वैसे दिया हुआ है. या और सर एक बुक में देखें इसका सॉल्यूशन, हाँ, इसको सर एंगल को कंसिडर किया है. बट ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब गेट का जो आंसर की था इस पेपर का, उसमें तो आंसर इससे आ रहा है, बट एंगल चलिए कंसीडर सर क्यों करेंगे? इसमें आई डोंट थिंक एंगल कंसीडर क्यों करें, क्योंकि सर क्योंकि देखिए सर जो इंक्लाइन भी है आपका सर, आई सर रहेगा थॉट. सर रोलिंग रेजिस्टेंस में तो सर डिफरेंट एंगल्स पे, अगर तो ये कुछ एंगल्स में है ये आपका, इट इज एन ये एंगल, इसके लिए कुछ और होगा सर, इसके लिए कुछ और होगा सर, इसके लिए कुछ और होगा. बट रोलिंग डिफरेंट रेजिस्टेंस एंगल्स पूरा, के लिए. रोलिंग रेजिस्टेंस इट इज ए कांस्टेंट, ठीक है. सर एक चीज बस क्लियर कर दीजिए, रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? ये माइनिंग मशीनरी में होगा पार्ट है, बट जस्ट रिमेंबर दैट if a mine car, you say, if a mine car or any vehicle is moving, then there is a resistance to its Wheels. motion of the wheels, and it has some resistance which is calculated as Newton per mass. Mass can be in kg or per in ton. तो ठीक है, तुम्हारा क्वेरी देख रहे हैं, बट जहां क्वेश्चन तक मुझे सही है लगता है, सर उनका, क्योंकि सर इंक्लाइन में सर जो अपना मोशन होगा वो तेज होगा, या बट तेज होगा, ओके, बट और यहाँ सरफेस यहाँ में सर प्लेन वेलोसिटी में से स्लो हो जाता है. there is no relation of rolling resistance with the velocity. कोई हाँ रिलेशन नहीं है वेलोसिटी से. आई नो, यहाँ भी तो here velocity will be, if 50 then here velocity will be 10 and then हाँ 0, means velocity changing in every second velocity is changing, so there is no relation हाँ. between velocity and rolling resistance, work done by rolling resistance. Here what we need is what is the work done by rolling resistance force.
तो अपन वर्क डन निकाल लेंगे तो रोलिंग Yeah, work done. We only want work done. So what is work done? Work done is force into distance traveled. कितना distance traveled हुआ? And this distance traveled is the 45 plus 85. तो यहाँ पे तो force is the constant. This F is the constant which we have to calculate. Then where theta will help you? सर थीटा का वर्क सर काम क्या आपका है? स्केलर क्वांटिटी है ना सर? क्या स्केलर क्वांटिटी है? कौन सा? वर्क सर उसका स्केलर क्वांटिटी है ना? वर्क डन, हाँ, डॉट प्रोडक्ट के बाद तो स्केलर क्वांटिटी, वर्क या स्केलर क्वांटिटी। हाँ सर, तब आप सही है, क्योंकि वर्क हम इज द अगर वेक्टर रहता तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं, बट यहाँ तो डिस्टेंस लेना होगा। डिस्टेंस मींस हाउ, कितना, जो भी लाइक व्हील्स है ये कितना सरफेस में रोल्ड किया, मींस हाउ मच लेंथ ऑफ द सरफेस इट रोल्ड, ये देखना है कितना लेंथ ऑफ सरफेस इट रोल्ड डाउन, देन इट विल बी द सिंपल द लेंथ। यहाँ पे थीटा कोई काम नहीं है, रोड का थीटा या एंगल का कोई काम नहीं, उतना क्वेश्चन में ये सब नहीं हाँ, है। उस क्वेश्चन में जो बनाया गया था सर, वो बस आपका जो फर्स्ट है 40 इधर cos थीटा प्लस 85 मीटर, यानी कि 45 cos थीटा प्लस 85 मीटर ऐसे करके लिया गया था। तो मींस उस केस में डिस्प्लेसमेंट दिया गया था। आई थिंक सर डिस्टेंस ही सही होगा, क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है। या एंड वर्क इज ड्यू टू द रोलिंग सरफेस, ये नहीं कि हाइट कितना है या फिर ये कितना है, कितना सर, ये वो गलत है, cos थीटा वाला गलत है, आई एम श्योर। Like in this question, solve this question. Force is 50 I cap minus 50 J cap, and it is given that body will move from origin. This is the origin 0, 0, 0, and coordinate of 4 and 2 is 4 and 2. Work done in the process. Tell me the work done is equal to F dot R. What is R vector here? I have told you in the first class how to write the I cap, J cap. 4i. Yes, 4i cap 4i 2j plus 2j plus cap. 2j। अब डॉट प्रोडक्ट करके बताओ, बहुत सिंपल है, यू हैव टू जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट। 50 I cap minus 50 J cap dot 4 I cap plus 2 J cap मैं do this 100 dot product 100j 100 joule. 250 into 4 200 Yes, sir. minus 50 to 100 100 sir. 100 right 100 I. yeah 100 is given. Thank you. I think now it is clear to everyone. Yes sir. Yes sir. Okay. Acha, here there is a question of torque. First, what is torque? Force into radius.
Yes, force into radius. But this time, this is the cross product. This is the perpendicular. If a rod, this is a rod, okay, and it is pivoted at this point, यहाँ पे fix किया गया, fixed at this point, यहाँ पे fixed at this point. Let's say a force F you are applying, which is away from the center, means the fixed point with radius r. Then what will be the torque? Torque क्या होगा? F into r. Yes, sir. Let's say this is the pulley and this is the center of the pulley, fixed center, and this pulley is attached with a rope which makes a tension of T, and radius of the pulley is r. Now tell me the torque. T into R. T into r. In both Yes. the examples, we have seen that which distance you Yes, have to sir. take. Means if direction of force is in this direction, then you have to take the Perpendicular r distance. vector in the perpendicular, normal to perpendicular. this. Yeah, normal to this. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. A block is there. नहीं छोड़ो. Same a rod is there, which is fixed at this point, okay, and a force F equal to 10 Newton is applied in this direction, which makes an angle of 30 degree from this, and this distance is 4 meter. Find the torque. Give the torque. What will be the torque? टॉर्क सर आपका रोटेटिंग एक्शन, तो एफ कॉस Yeah. इसका लगेगा, एफ साइन एम साइन लगेगा ना सर, Sin 30 into 4. Good. 4 into एफ साइन थीटा. 10 sin theta into 4. Into 4. Means we have to take which component of F, which is In y direction. perpendicular to the body. Body. ये perpendicular है, and this R is also perpendicular. R vector and T vector, force vector is perpendicular. So we have to take y component. ये clear हुआ? I think this is clear. सर एक मिनट हटिएगा नहीं सर, थोड़ा सा Yeah. लिख लूं मैं. लिख लो. हो गया सर. हो गया. हाँ. If this type of question has been asked already, now solve this question. 10 Newton, 60 degree.
This is 60 degree. Okay, this is 60 degree, remember, and this is 10 Newton. And now give me the value of torque, net torque. 20 आएगा सर. 10 plus 10 sin 16 to 4. 20 सर. Torque is the net force into R. And what is the F here? 10. 10 in this direction, 10, and in this direction of this component will be 10 sin 60. 10 sin 60, 30. Yes sir. which will be minus because it is in opposite direction. Oh sorry, यार दिक्कत हो गया. सर हाँ ऊपर वाला माइनस होगा ना सर. कोई भी माइनस करो, it will determine the direction. I am not asking the direction right now. I am asking about the value. सर मिस्टेक हो गया सर, मिस्टेक वाला. Yeah, 10 Newton to directly y-axis में है. This is on y-axis, no problem. 10 minus, yes because this is in opposite direction. 10 sin 60. 30 minus 4. Let's say take it 30 for the. सर इसको अपन -10 plus 10 sin 60 लिखेंगे कि 10 Let's take it 30 degree for the EG. 30 degree. मतलब कैलकुलेशन में आसान होगा. साइन अगर 30 लेते हैं माइनस तो माइनस करेंगे तो माइनस ही ना आएगा. इसमें -10 plus 10 sin 30 होगा ना. No. If ऊपर वाला जो है वो माइनस हो जाएगा. If you are taking this direction of motion as positive, then you can write at 10 minus 10 sin 30 degree. ये minus plus will give you the direction only. If force in this direction is more, अगर net force will be in this direction, then motion क्या होगा? Rotation motion इस direction में. If force in this direction will be more, अगर इस direction में जब force ज़्यादा होगा, then motion will be opposite to this and will be in this direction. This sign will only give you the direction. Okay. Sign will give you only the direction. ये solve हो गया? What will be the value of torque? 5 into 4, 20. 5 into Newton meter. सर ये थोड़ा सा साइन में मेरे को कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है. यहाँ पास में मैं इसको सर आगे वाले को भी माइनस में ले सकता हूँ. कौन सा आगे वाला? ये जो आप f ये जो अपन f निकाले ना, f इक्वल टू 10 minus 10 sin थीटा. इसमें मैं जो स्टार्टिंग में 10 लिखे आप इसको माइनस बाद वाला प्लस ले सकता हूँ. Yeah, you are telling that you wanna write it as 10 sin 30 degree minus 10. ठीक है? minus 10. हाँ. तो इसे तो ये तुमने लिया. This means you are taking this direction as positive. मतलब तुम मान के चल रहे हो. As positive. Yeah. तुम मान के चल रहे हो. ठीक है? तो what will be the value? Value will be in negative -5. हाँ. So this minus shows that whatever the direction you have taken, the motion will be in opposite to that. Opposite to that. Yeah, this minus will show that. ठीक है? ठीक. If you have taken clockwise as positive, then it is you get minus here, then means the real direction will be anti-clockwise.
Anti-clockwise. Yeah, real direction. This sign will only give you the direction. Direction. Yeah. ये clear है सबको? Torque का? Basics of torque. And what's its unit? Newton meter. Newton. अच्छा, what is power? Joule per second. Force into velocity. Or you can say energy per unit time. Energy per unit time. ठीक है? Then tau omega also gives power. What is omega? So Rotational. angular velocity. Yeah. अच्छा, angular velocity. Yeah, angular velocity or rotational velocity. Angular velocity. ये भी formula लिख लेना. This formula is very useful in mining machinery topic. इंजीनियरिंग सर बस डिग्री के लिए किए थे सर, बाकी 11th 12th ही पढ़ना चाहिए था 4 साल। हाँ, अगर 4 साल 11th 12th पढ़ते तो फिर उसके बाद गेट के लिए बस 2 महीना पढ़ना पड़ता, 2 months। ये बात सही बोले सर। पूरा गेट सिलेबस, होल गेट सिलेबस बेस्ड ऑन द 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री। I'm searching one question. नेक्स्ट क्लास 2019 का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा। आई विल शो यू 2019 काइनेमेटिक्स क्वेश्चन। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द इक्वेशन डेट आई हैव टोल्ड यू। उसमें बताया था ना जो बेसिक्स, द बेसिक्स आई हैव टोल्ड यू दैट इफ मास m इज you are throwing with a velocity v and it is in the above the ground h, then how, after how many seconds time t it will be on the ground। ये क्वेश्चन करवाया था। ये टोटली बेस्ड ऑन द, ये पूरा रिलेटिव सिस्टम से बन जाएगा बेसिक से। वो मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन से बताऊंगा। ये शायद यही क्वेश्चन है। Let's do this question. A drive shaft of an engine develops torque of 500 Newton meter. It rotates with a constant speed of 50 rpm. N is the rpm. The power transmitted by the shaft. What is the formula of power? Tau into omega. Tau is given at 500. Now omega is given in rpm, rotation per minute. 2 pi n by 60. 2 pi n by 60 is equal to omega. Remember this formula. What will be the omega? कितना देगा? 50 60 is equal to omega 100 pi by 60. कितना? 10 pi by 6. 10 pi Yeah, 10 pi by 6. 10 pi by 6. At least this part is clear now. 2 pi n by 60 is the omega. N is the rpm. Remember this formula. This will be very helpful in mining machinery topic. हाँ सर,
सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ज्यादा इधर उधर नहीं आता है गेट में। 2616 नहीं। हो गया सबका? किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? गणेश, गणेश 2.6 नो सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? गणेश पाटिल भी? समझ में तो आ गया सर। हाँ समझ में आ गया। ओके, मैं भी एज्यूम इधर कर रहा हूँ। काफी बारिश हो रहा है सर। सेम हियर, बहुत तेज बारिश हो रहा है। डोंट वरी, एटलीस्ट दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड। सर तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है अभी तक। अच्छा, you know about the spring? हाँ, What is the energy of the spring? half ks square. यस सर। Spring energy. स्प्रिंग कांस्टेंट के K is the स्प्रिंग कांस्टेंट spring Spring constant. constant. ठीक है। What is X? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? Change in distance. X is the change in the distance or displacement from the normal Yes. position. Means कितना stretch हुआ और कितना compress हुआ. X is the amount of compression or Times. means rarefaction बोलते हैं, क्या बोलेंगे जो खींचते हैं उसे? लेंथ स्ट्रेंथ एक्सपेंशन, एक्सटेंडेड एक्सपेंशन, expansion. एक्सपेंशन। Expansion. Solve this question on this formula. वो सर एक बार और बताइए ना जरा इसको, वैल्यूज बता दीजिए बस जो है। ठीक है। This is the spring हाँ attached with a mass m. ठीक है। If you compress this string with a x हाँ distance, means final block will be there. हाँ Will be there. ठीक है। Then what will be the energy stored? Energy stored in the Guys. by a spring. In a spring is given by the formula half kx square. K is the constant of the spring constant, and x is the distance by which it is compressed or expanded. ठीक है। Now solve this question. What is given? Mass 1 ton mine car traveling at a constant speed of 10 km per hour. Mass is given m and velocity is given. ठीक है। It collide with buffer and comes to rest. Buffer spring stiffness is 200 kilonewton per meter. Maximum compression in the ring is everyone write this value at least. Yes, sir. वैल्यू लिख लिया सबने? एक मिनट अभी नहीं। ओके। तो इसके साथ पेन के एन वी एस क्या? सर इसके साथ पेन सर यहाँ पर हाँ हो गया। It is asked in the question compression means what is x? Question में पूछा गया है what is x? In question it is given that a spring buffer is there and a mine car of 1 ton is traveling with a velocity of, what is the velocity given? वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 kilometer per hour. Please change it to meter per second.
5 into 5 by 18. 5 by 18. 50 by 18 meter per second. Okay. Now tell me, this is the initial condition. What is the total energy? 2.7. यहाँ पे एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी हाफ MB स्क्वायर. हाफ एम बी हाँ स्क्वायर. हाफ एमबी. इसका हाँ. एनर्जी तो जीरो होगा बिकॉज इट इज इन हाँ. एट नॉर्मल पोजीशन x equal to 0. जी. Now this is the mine car. Now final condition is given that it is in rest and it is compressed with some x. Now give me the final energy. Now what is the energy? हाफ kx स्क्वायर. Half kx square. Kinetic energy of this body is 0 because it is in rest, is given in the question. हाँ हाँ हाँ. Now now equate the initial energy and final energy. What is the initial energy? इनिशियल एनर्जी तो सर हाफ एमवी स्क्वायर. Yeah, and final energy is फाइनल एनर्जी हाफ केवी के एक्स स्क्वायर. kx square. Half कट गया. हाँ हाफ कट गया. m is given as एम 1 आ ton गया आपका 1 टन. हाँ. and वी आ गया velocity 2.7. 10 किलोमीटर पर आवर. 2.7 सर मीटर पर. 2.7 square. What is k? K is the 200 kilonewton per ton. मीटर पर मीटर. Oh, per meter into x square. Now you can calculate x from this. 1 ton is equal to 1000 kg. 2.7 का square, let's say it's approx 7 is equal to 200 kilonewton is there. So it will be 10 to the 3 Newton into x square. 10 to the 3, 10 to the 3 cut गया. Now what will be x? The square of 7 upon 200. 7 upon 200 meter. ठीक है. किसी को डाउट है यहाँ पर? आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन अच्छा था. इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी इक्वेट करना. यू हैव टू जस्ट इक्वेट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम एंड द फाइनल एनर्जी. सर 2.7 सर. हेलो, क्या बोलो सर 2.7 का सर थोड़ा सा बता दीजिए कि सर 2.7 सर हम लोग क्वेश्चन में दिया रहा था सर. ये 2.7 स्क्वायर सर ये वाला सर बोल रहा था. 2.7. 2.7 का स्क्वायर है. ये तो हाफ एमबी स्क्वायर ना. वेलोसिटी स्क्वायर. यस सर. ओके सर. ओके सर. वेलोसिटी स्क्वायर. I have assumed that 2.7 square is 7, approx 7. 7. ठीक Yeah. ठीक. ओके. Don't go for the value. I assumed that 2.7 square is equal to 7. हाँ 7.30 कुछ होता है. ठीक है. हाँ तो वही अंदाजा लगा.